Hi everyone. In today's class, we are going to deal with the muscle contraction mechanism. But before dealing with the muscle contraction mechanism, you have to understand two terms given in the NCERT. One is the motor unit and second one is the neuromuscular junction. When we talk about the motor unit, the definition given in your NCERT is the single motor neuron. Before moving ahead, you have to understand we have studied two types of neurons will be there. What are the two types of neurons? One is the sensory neuron and second one is the motor neuron. Of course, you must have studied about the mixed neuron, but I'm not talking about that. Okay. Now, sensory neuron, what does it do? It sends signal from where to where? From the sensory organ to the CNS. Okay, that means the receptors present on the sensory organ will send signal to the CNS. What about the motor neuron? The CNS has to send signal back to the effector neurons, right? Sorry, to the effector. So यहाँ पे क्या होगा? Motor neurons will send signal from where to where? From CNS to the effector. ठीक है? Now, if you remember 10th class में you have studied the example. One second. 10th class में you have studied the example. So if you are going to touch a hot cooker, right? If you are going to touch a hot cooker, so what will happen? Your skin will be having lots of receptors. Okay, let me make a brain over here. It's your brain. Okay. Now, if you are going to touch a hot cooker, what will happen? What will happen? The receptor will receive a stimuli, right? And this stimuli will be sent to your brain, right? Through which neuron? Through the sensory neuron. Through the sensory neuron. Then sensory neuron से CNS के पास तो चला गया, but still my hand is touching the cooker, right? इसको इतना बड़ा बना दो. Touching the cooker, right? Now CNS will immediately send a signal. CNS will immediately send a signal to the effector, in order to pull back your hand, right? So from CNS to effector, which neuron will carry the information? Motor neuron will carry the information. So this motor neuron, when it is attached to many muscle fiber, mind it, see, one single muscle fiber will not help you out in the contraction, right? मैं एक रबर के साथ contraction करूं या many रबर के साथ, तो वो ज्यादा informative होता है, right? ज्यादा अच्छी तरीके से हो जाएगा. So same way यहाँ पे motor unit, नाम में ही है, confuse मत होना. Motor unit means which neuron is responsible? Motor neuron. किसके साथ attach कर रहा है? It is attaching with the muscle fiber. But क्या only one muscle fiber के साथ? नहीं, many muscle fiber. So what is, यहाँ पे तुम देख सकते हो axon terminal इतने सारे हैं, and then the synaptic bulbs are attached with the many muscle fiber. याद आ रहा है? Muscle fiber, bundle of muscle fibers will be there, right? So many muscle fiber के साथ वो attach कर रहा है, ठीक है? So this we call it as motor unit. Then the second term given is your neuromuscular junction. नाम में ही है, neuro means again I am talking about the neuron. Which neuron? Motor neuron. Sensory neuron से हमें मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है? Muscular junction, that means I'm talking about the muscle fiber. Muscle fiber के किसकी बात कर रही हूँ मैं? The junction between the pre-synaptic membrane. Pre मतलब पहली, synaptic मतलब synaptic bulb हो गया तो synaptic. So पहला जो न्यूरॉन होता है उसको हम pre-synaptic membrane बोलते हैं, end of the neuron को, ठीक है? So this is pre-synaptic membrane and this is the sarcolemma of the muscle fiber. So the junction between sarcolemma and the presynaptic membrane, उसको हम क्या बोल देते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोल देते हैं, ठीक है? यहाँ पे some basic information you should be aware about it. So this is basically your synaptic bulb जिसके ऊपर channels लगे होते हैं. What channels these are? These are the voltage gated calcium channel, ठीक है? voltage gated क्यों बोला, कैसे बोला, आगे पढ़ेंगे, ठीक है? So calcium channel है तो इसके अंदर क्या enter करेगा? Obviously calcium will enter, ठीक है? And these are the synaptic vesicles. Synaptic vesicles के अंदर you can see this purple color one is the neurotransmitter. Write it in the comment section that the neurotransmitters are produced by which part of the neuron, which organelle is going to produce the neurotransmitter. Okay, and then यहाँ पे तुम देख सकते हो neuromuscular junction में neurotransmitter release हो गए, क्यों क्या कैसे, सब कुछ पढ़ेंगे हम, ठीक है? Then this red color one hole is your muscle fiber. Muscle fiber की तुमने पढ़ा था muscle
plasma membrane is called as muscle lamella, my bad, sarcolamella, and these sarcolamella will have invagination inside, right? This invagination we call it as T tubule, याद आ रहा है, which will help in the equal spreading of the action potential. And these green color ones are the receptors. Receptors for what? Receptors for the neurotransmitter. मसल कॉन्ट्रैक्शन में हम एक रिसेप्टर्स की बात करते हैं, एक रिसेप्टर की बात करते, सॉरी माय बैड, एक न्यूरोट्रांसमीटर की बात करते हैं, दैट इज ACH. इसको हम क्या बोल देते हैं? एसिटाइल कोलिन. ओके, सो व्हिच न्यूरोट्रांसमीटर विल टॉक अबाउट यहाँ पे? ACH. तो ये रिसेप्टर किसके रिसेप्टर्स हो गए? ACH के रिसेप्टर हो गए. जैसे ही ACH आएगा, these receptors will get open, और जैसे ही ACH नहीं बांध करा या नहीं है, तो फिर क्या, what will happen? These receptors will be closed. Okay, so this was about the motor unit, neuromuscular junction, and small information about the neuromuscular junctions. ठीक है? Then let's jump on the mechanism of the muscle contraction. Your NCERT says that the mechanism of muscle contraction is best explained by the sliding filament theory. याद आ रहा है मैंने क्या कहा था? Myosin is moto, so it won't be moving from its place. Who will be moving? Only and only actin will be moving, right? So actin will slide over the myosin. This whole sliding filament causes the muscle contraction. So what does sliding filament theory states? It states that the muscle fiber contracts when the thin filament, that is actin, slides over the thick filament, that is myosin. ठीक है? So this is the basic mechanism. बस इतना सा ही है sliding filament, but it is explained in a गुड वे. एनसीईआरटी में इस तरीके से नहीं है, बट अगर तुम इस तरीके से नहीं समझोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि एनसीईआरटी बोलना क्या चाह रही है. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन 3 स्टेप्स. फर्स्ट वन इज योर एक्साइटेशन ऑफ द मसल. सेकंड वन इज गोइंग टू बी द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ द मसल. एंड जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो रिलैक्सेशन ऑफ द मसल. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्साइटेशन ऑफ द मसल. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइटेशन ऑफ द मसल? तुम्हें क्या बताया था? हियर मोटर न्यूरॉन्स, हम सेंसरी न्यूरॉन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, मोटर न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं. ठीक है? सो दीज मोटर न्यूरॉन्स विल सेंड सिग्नल. ये सिग्नल कहां पर आ रहा है? तुम्हारी एक्सॉन टर्मिनल पे आ रहा है, एक्सॉन टर्मिनल ऑफ द मोटर न्यूरॉन. और ये सिग्नल क्या है? इनिशियली विदाउट सिग्नल इनर साइड विल बी नेगेटिव एंड आउटर साइड विल बी पॉजिटिव. बट जैसे ही इम्पल्स जनरेशन हुआ, इनर साइड विल बिकम पॉजिटिव एंड आउटर साइड विल बिकम नेगेटिव. कैसे? सोडियम इनफ्लक्स की वजह से. ठीक है? नाउ ड्यू टू दिस व्हाट विल हैपन? the voltage gated channels which are open the voltage gated channels which are open over here, my bad, the voltage gated channels will get open as soon as the voltage gated channel. अच्छा, ये voltage gated channel किसके हैं? कैल्शियम के हैं. So calcium voltage gated channel will open as soon as the action potential is generated. The calcium will enter inside the neuron. Now these calcium will bind to the synaptic vesicles. एक बार diagrammatic way में समझ लो, फिर थ्योरी बता दूंगी. ठीक है? Now these calcium enter करने के बाद it will fuse with the synaptic vesicles. आप higher classes में पढ़ोगे, it will bind to the protein of the synaptic vesicles. synaptic vesicles से नहीं करता है, but ये सब higher classes की बातें हैं, अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है. For 11th and 12th standard, it's more than enough to remember that the calcium will bind with the synaptic vesicle. Now this causes the fusion of synaptic vesicles with the presynaptic membrane. जैसे ही fusion हुआ, what will happen? This neurotransmitter will enter into the neuromuscular junction. अच्छा, ये कौन से neurotransmitter है? These are the acetylcholine, that is ACH. अब क्या करेंगे? ACH will bind to the receptor of the ACH, but where these receptors will be present on the sarcolemma. यही ऊपर बताया था. तो यहाँ पे देखो, ACH will bind to ACH will bind to the receptor. जैसे ही bind करा, दरवाजा क्या हो गया? ओपन हो गया. ओपन होते ही what will enter inside? आपका बाहर सोडियम था, सोडियम will start entering inside, and this causes a huge amount of influx of sodium. यहाँ पे देखेंगे the receptor के साथ ACH bind नहीं है, मान के चलो ACH कम है या फिर receptors ACH का नहीं है. ठीक है? So can sodium enter inside through this receptors? No, it cannot
enter. Only and only when the two ACH will bind to the receptor, these two doors will open. ये एक ही receptor है but दो ACH bind करता है, ठीक है. Then sodium influx will happen inside. तो इससे पहले मेम्ब्रेन कैसी थी तुम्हारी, यहाँ पे मेम्ब्रेन कैसी थी, नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. बट जैसे ही यहाँ सोडियम एंटर करने लग गया, व्हाट विल हैपन टू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज इनसाइड एंड नेगेटिव चार्ज इनसाइड, सॉरी आउटसाइड. सो यही चीज यहाँ पे दिखाई हुई है, ठीक है. अब नाउ दिस एक्शन एंड दिस वी कॉल इट एज जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल. अब ये एक्शन पोटेंशियल विल ट्रेवल थ्रू टी ट्यूब्यूल्स टुवर्ड्स ऑल द सार्कोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ठीक है. एंड इस एक्शन पोटेंशियल जनरेशन की वजह से क्या हो गया, द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव अ कैल्शियम रिलीजिंग चैनल, जिसकी वजह से क्या हो गया, दिस कैल्शियम रिलीजिंग चैनल विल गेट ओपन ओनली एंड ओनली व्हेन द एक्शन पोटेंशियल्स आर जनरेटेड. नहीं होगा तो ये चैनल क्लोज रहेंगे तो कैल्शियम प्रेजेंट इनसाइड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओनली, वो बाहर नहीं आएगा, ठीक है. बट ड्यू टू एक्शन पोटेंशियल व्हाट हैपेंड, दिस कैल्शियम स्टार्टेड कमिंग आउट इन द सार्कोप्लाज्म. पहले कहा था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, अब कहाँ आ गया, सार्कोप्लाज्म में आ गया, ठीक है. नाउ दिस सार्कोप्लाज्म में व्हाट विल हैपन, कैल्शियम अमाउंट विल गेट इंक्रीज. अब तुम्हें याद आ रहा है हमने क्या पढ़ा था, एफ एक्टिन विल बी देयर, टू हेलिकली बॉन्डेड स्ट्रक्चर विल बी देयर एंड देन इसके ऊपर तुम्हारा क्या फाइब्रस ट्रोपोमायोसिन बाइंड करेगा, दिस ब्लू कलर वन, एंड उसके ऊपर एट द रेगुलर इंटरवल यू विल सी द ट्रोपोनिन, राइट. ट्रोपोनिन के 3 यूनिट हमने पढ़े थे, टीपीटी, टीपीआई, टीपीसी. याद आ रहा है, टीपीसी विल बाइंड विद व्हाट, याद आ रहा है, टीपीसी विल बाइंड विद द कैल्शियम. सो जैसे ही कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में रिलीज हुआ, टीपीसी विल कम एंड बाइंड विद द, माय बैड, कैल्शियम विल कम एंड बाइंड विद द टीपीसी. जैसे ही कैल्शियम बाइंड हुआ, अब तक क्या था तुम्हारा, ये एक्टिव साइड ऑफ द एक्टिन कवर्ड था, बट जैसे ही कैल्शियम बाइंड हुआ, कैन यू सी अनमास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट हो गई. दैट मींस नाउ दिस इज फ्री टू बाइंड विद द मायोसिन, ठीक है. कैल्शियम टीपीसी अपने साथ साथ द एंटायर ट्रोपोनिन यूनिट एंड द ट्रोपोमायोसिन को रिमूव कर देता है, रिमूव इन द सेंस उस साइड से हटा दे रहा है, ठीक है, उस साइड से हटा दे रहा है, विच कॉजेस द अनमास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एक्टिन, ठीक है. नाउ दिस होल जो मैंने तुम्हें डायग्रामेटिक वे में समझाया वही थ्योरेटिकल वे में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, सीएनएस सेंड सिग्नल थ्रू द मोटर न्यूरॉन, nerve impulse arrive at the axon terminal, stimulates the voltage gated calcium channel and calcium enter into the axon terminal through voltage gated channel. These calcium will bind to the synaptic vesicles which stimulates the fusion of synaptic vesicle with the presynaptic membrane which releases neurotransmitter ACH, that is acetylcholine. Two molecule of acetylcholine bind to the receptor which leads to the entry of sodium ion which causes depolarization, and these action potential will be traveling around the along the T tubule, and this calcium this due to this what will happen, calcium releasing channels get open, calcium release into the sarcoplasm, calcium bind with the TPC, and this causes the unmasking of the active site for the myosin on the actin. So this was whole about the excitation. अब excitation तो हो गई है, अब क्या करना है, एक्टिव साइट तो वेकेंट हो गई है एक्टिन की, अब हमने क्या करना है, बाइंड करना है, किसको बाइंड करना है, मायोसिन को. पर क्या ऐसे ही ओपन करते मायोसिन बाइंड हो जाएगा, नो, वी नो दैट एवरीथिंग रिक्वायर्स एनर्जी. तो यहाँ ध्यान से देखेंगे व्हाट विल हैपन, दिस इफ यू रिमेंबर, वन सेकेंड, this if you remember we studied, this is the meromycin head, this is the head, and this is the arm, short arm. Together we call it as cross arm. ये एक मेरोमाइसिन मैंने दिखाया, ऐसे बहुत सारे मेरोमाइसिन होंगे, ठीक है. Now what is present in the meromycin head? In the meromycin head, ATPase is present. That means ATPase, enzyme for breaking the ATP. Then what is present? Binding site for the ATP is present and binding site for the active site is present, ठीक है. अब इसमें होगा क्या, देखो, ATP आया, energizing the myosin head. The first step we have to do is, देखो, एक्टिव साइट वेकेंट होने के बाद मायोसिन जाके बाइंड नहीं कर जाएगा, फर्स्ट वी हैव टू एनर्जाइज इट, ठीक है. एनर्जाइज कैसे करेंगे, एटीपी हाइड्रोलाइसिस के साथ. हमें पता है, अंडरस्टैंड वन थिंग, वी यूजुअली से दैट एटीपी प्रेजेंट इन आवर बॉडी, दैट मींस एनर्जी इज प्रेजेंट. नो, एनर्जी विल बी ओनली प्रेजेंट when the ATP is broken down, and ATP will be broken down in the presence of water and in the presence of enzyme ATPase, ठीक है. तो अब क्या होगा, मायोसिन हेड में तुम्हारा ATPase है, दैट मींस
which will break down the ATP. फिर ATP binding site है, ATP जैसे यहाँ पे bind करेगा, what will happen, the ATPase will break ATP to form ADP plus PI. Actually this inorganic phosphate ही है जो energy है, जैसे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना दैट मींस तुम्हारी सेल को एनर्जी मिल गई, एटीपी होने से एनर्जी नहीं मिलती है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके। देन मायोसिन हेड गेट एनर्जाइज, अब ये एनर्जी तो आ गई इसके पास, ठीक है, इसको क्या करना है, अल्टीमेटली बाइंड करना है, बाइंड करके एक्टिन की स्लाइडिंग करानी है। सो पहले कैसे बाइंड करेगा, जब हेड एनर्जाइज होगा तभी करेगा। सो सबसे फर्स्ट इज द एनर्जाइजिंग द हेड, जैसे ही हेड एनर्जाइज कर गया, अब व्हाट विल हैपन, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अ क्रॉस ब्रिज। जैसे ही हेड एनर्जाइज कर गया, the active site of the actin and the active site of the myosin will bind together. है मायोसिन का हेड जो है एक्टिन के एक्टिव साइट से जाके चिपक जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी एडीपी एंड पीआई सब कुछ अंदर है, कुछ रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है। इट्स जस्ट दैट एडीपी एटीपी इज ब्रोकन डाउन इनटू एडीपी प्लस पीआई, बट ये सब कुछ अंदर है, मायोसिन के हेड के अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं आया हुआ है, ठीक है। नाउ ATP utilizing the energy, myosin is going to bind with the head of the actin, that my bad, myosin head is going to bind with the active site of the actin, ठीक है ना। so जैसे ही इसने bind कर दिया, इसको हम बोलते हैं cross bridge, this is PYQ, cross bridge is your PYQ. so cross bridge is formed only and only by utilizing the energy, and myosin head will bind with the active site of the actin, ठीक है ना। usually for this process पीआई, मैंने क्या बोला, अगर वो एनर्जाइज हो रहा है, वो बाइंड कर रहा है, दैट मींस एनर्जी लग रही है, एनर्जी किससे आ रही है, हमें ऑर्गेनिक फॉस्फेट से आ रही है, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक्चुअली बाहर रिलीज हो जाएगा, बट तुम्हारी एनसीईआरटी ये नहीं कहती है, तो हम इसे नहीं पढ़ते हैं बिकॉज कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इस लाइन को छोड़ दो तुम। योर एनसीईआरटी सेज एडीपी एंड पीआई एवरीथिंग इज देयर इनसाइड द हेड ऑफ द मायोसिन। नाउ अब जैसे ही इसने अटैच कर लिया, अटैच करना, अटैच क्यों करा है, बिकॉज इट हैज टू स्लाइड द एक्टिन, राइट। नाउ ये एक्टिन को स्लाइड करने के लिए क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। सो थर्ड स्टेप इज स्लाइडिंग और द रोटेशन ऑफ द मायोसिन हेड। जैसे ही वो रोटेट करेगा, व्हाट विल हैपन, द पीआई एंड एडीपी ऑल थ्री थिंग्स विल बी रिमूव आउट ऑफ द मायोसिन हेड। सो ये क्या बोलते हैं, इसे हम क्रॉस ब्रिज रोटेशन बोलते हैं। क्यों क्रॉस ब्रिज रोटेशन बोला, क्योंकि ये हेड इसके साथ बाइंड करके क्रॉस ब्रिज बना रहा है। सो अकेला सिर्फ मायोसिन का हेड रोटेट नहीं कर रहा है, द अटैच एक्टिन एक्टिव साइट एक्टिन भी तो रोटेट करेगा ना। सो इसलिए हमने बोला क्रॉस ब्रिज रोटेशन, ठीक है। This myosin head releases ADP plus PI which generated force, okay, towards the M line. याद आ रहा है M line यहाँ पे थी, यहाँ पे myosin होगा, यहाँ पे तुम्हारा actin होगा, और यही मैंने बोला था actin will move towards the M line. So generate force on the M line and the myosin head pulls the attached actin। जो तुम्हारी myosin head यहाँ पे attach थी, वो rotate करके, पहले देखो वापस से बता रही हूँ, ये एक myosin है, ठीक है, और ये एक एक्टिन है, इसकी हेड जो यहाँ पे अटैच थी, और ये हमारा एम लाइन है, ठीक है, ये पूरी मायोसिन है, इसका हेड यहाँ पे अटैच है। अब ये एक्टिन को इस तरफ मूव करना है, सो ये पहले अटैच यहाँ पे था, अब ये रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है मतलब यहाँ से यहाँ पे अटैच, यहाँ से यहाँ अटैच करा, यहाँ से रोटेट कर गया इस तरीके से। जब वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो एक्टिन को इस तरफ फेंक रहा है, दैट मीन्स टुवर्ड्स द एम लाइन, ओके। सो मायोसिन हेड pulls attach myosin head pulls attached actin towards where center of the A line, and this we call it as power stroke। तो क्या किया हमने, पहले मायोसिन के हेड को एनर्जाइज करा, एनर्जाइज करने के बाद क्रॉस ब्रिज फॉर्म करा, क्रॉस ब्रिज फॉर्म करने के बाद अब मुझे रोटेशन करनी है सो दैट मैं एक्टिन को एम लाइन की तरफ फेंक सकूं, दिस we call it as power stroke PYQ, ठीक है। so actin slides inward and meet at the center of sarcomere, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एक्टिन मूव करेगा एंड सार्कोमियर के मिड में, अगर ये सार्कोमियर है, यहाँ पे देखेंगे तो ये तुम्हारी सार्कोमियर है। सो यहाँ पे देखो किस तरीके से ये एक सार्कोमियर, ये एक सार्कोमियर किस तरीके से एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन में मीट कर जा रहा है, किस तरीके से टुवर्ड्स दी एम लाइन मूव हो रहा है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सो नाउ Z line pull towards inward, यही हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, causes contraction and the which reduces the I band, A band retain the same length, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं वैसे। मायोसिन हेड रिटर्न टू द लो एनर्जी, अब तो इसने पावर स्ट्रोक कर दिया,
मूव कर दिया एक्टिन को टुवर्ड्स द एम लाइन। अब इसके पास एनर्जी नहीं है। अब एनर्जी कैसे आएगी तुम ही बताओ? जब न्यू एटीपी आएगा। पर क्या दिस हेड इज नॉट अटैच विद द एक्टिन टिल नाउ? जब तक एटीपी नहीं आता है तब तक वो अटैच ही रहता है। दिस हेड ऑफ द मायोसिन विल बी अटैच्ड टू द एक्टिव साइड ऑफ द एक्टिन until and unless न्यू एटीपी comes and bind। जैसे ही न्यू एटीपी होता है अब उसको क्या आ जाती है, मुझे एनर्जी मिलेगी, तो वो क्या करता है, क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। द ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज हैपन ओनली एंड ओनली व्हेन द न्यू एटीपी बाइंड्स टू द मायोसिन which breaks the old cross bridge। एटीपी अगेन हाइड्रोलाइज, अगेन सेम प्रोसेस, वही हाइड्रोलाइज होगा। हाइड्रोलाइज होने के बाद क्रॉस ब्रिज फॉर्म करेगा। देखो यहाँ से वापस से सेम एरो देखो, आई हैव शोन, यहाँ से फिर से ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स अगेन सेम रिपीटेड साइकिल, ठीक है ना। दैट मीन्स सेम एटीपी हाइड्रोलाइज होगी, क्रॉस ब्रिज फॉर्म होगा, रोटेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज होगा, एंड देन देयर विल बी ब्रेकेज ऑफ द क्रॉस ब्रिज। दिस साइकिल कंटिन्यूज until and unless you have calcium present over there। जैसे ही कैल्शियम बंद, ये साइकिल बंद। Okay, so this process continues, this is PYQ, this process continues till the calcium ions are pumped back to the sarcoplasmic cistern। जहां से आया था वहां पे चला गया। Mind it, I have written pumped back, I have not written releasing channel से अंदर गए। ठीक है, so this was whole about the contraction। अब contraction हुआ है तो अब relaxation होनी चाहिए। So let's understand with this diagram, ठीक है, उसके बाद थ्योरी समझा दूंगी। सो अब रिलैक्सेशन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन कब हुआ था, व्हेन यू गॉट अ सिग्नल फ्रॉम द मोटर न्यूरॉन्स। नाउ व्हेन देयर इज नो सिग्नल फ्रॉम द मोटर न्यूरॉन्स, सो इनसाइड आपका कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव होगा, आउटसाइड आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सो इट इज विद स्टेट, इट इज अ पोलराइज्ड स्टेट, इट इज अ पोलराइज्ड स्टेट, ठीक है ना। देन जैसे सिग्नल नहीं है, व्हाट विल हैपन, विल दिस, तुम खुद मुझे आंसर करो नाउ, ठीक है ना। Now, will this voltage-gated calcium channel will get open? No, it won't open. If it is not opening, where the calcium will be more outside the neuron? Will the calcium will be more inside the neuron? No, it won't be there. When the calcium is not there, will it fuse with the synaptic vesicle? No, it won't fuse. If it won't fuse, will be fusion of synaptic vesicle with the presynaptic membrane? No, it won't happen. If it won't happen, will there will be release of neurotransmitter? No, one second. Will be release of ACH in the neuromuscular junction? No, there won't be. अगर neuromuscular junction में ACH नहीं है, so will it bind to the receptor? No, it won't bind. If it won't bind, will this receptor channels will get open? Will these receptors will be open for the sodium? No, it won't open. It won't open. That means there will be no influx of the sodium ions. When there is no influx of the sodium ions, how is the charge inside? It is negative, outside positive. That means no depolarization. When no depolarization, will this calcium releasing channel will open? No, it won't open, ठीक है। But already open tha, so some amount of calcium will be there in the sarcoplasm। Now since the signal is not there, these calcium has to pump back to the sarcoplasmic reticulum through what, through calcium active pump। active pump क्यों बोला, pump always require ATP। so यहाँ से बाहर आने के लिए calcium, sarcoplasmic reticulum से बाहर आने के लिए it does not require ATP, but वापस जाने के लिए it requires ATP, it requires ATP। so यहाँ से calcium from the cytoplasmic reticulum, sorry, from the sarcoplasm to sarcoplasmic reticulum energy is required, ठीक है। अब जैसे ही calcium कम हो गया, is there is a calcium to bind with the TPC? No, there is no calcium binding with the TPC। so what will happen, again masking of the active site of the actin। जैसे ही masking होगी, what will happen, muscle relax हो गई। so this is one condition जब motor signal नहीं आई है। what if motor signal जब आई थी, lots of ACH is already present। मोटर सिग्नल तो चली गई है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना है, बट स्टिल लॉट्स ऑफ ACH is present, so obviously these ACH can go and bind to the receptor। obviously it can cause the sodium influx। कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है। so what we have to do, we have to break down this left over ACH। left over ACH break down हो जाएगा, break down हो जाएगा तो receptor से it won't bind, receptor से won't bind, that means depolarization won't takes place। this is whole concept of relaxation। so you can see here
Motor signal from the CNS stop. No action potential generated. That means voltage gated sodium channel will be closed. Calcium does not enter the synaptic knob. That means synaptic vesicles do not fuse with the presynaptic membrane. ACH not released. Sodium will not enter. That means depolarization won't take place. Calcium pumped back. यही बताया ना तुम्हें, लेफ्ट ओवर कैल्शियम विल pumped back. रिलीज वाले तो वैसे ही बंद हो गए हैं. It will be pumped back by using the ATP through calcium active ट्रांसपोर्ट पंप. एक्टिव क्यों बोला, एनर्जी लग रही है. ठीक है. कैल्शियम अमाउंट डिक्रीज इन द सार्कोप्लाज्म. कैल्शियम अनबाइंड विद द ट्रोपोनिन. अब तो वो बाइंड ही नहीं कर पाएगा ना, राइट. देन द ट्रोपोमाइसिन शिफ्ट बैक टू मास द एक्टिव myosin binding site on the actin. ठीक है. Return Z line back to its original position and this we call it as relaxation. And यहाँ पे extra knowledge लिखी हुई है कि we have to break down the extra ACH by the enzyme acetylcholine esterase, and it will break down into acetate and choline, and this choline will be again used in the formation of ACH. ठीक है. And this closes the sarcoplasmic calcium releasing channels. तो कैल्शियम रिलीजिंग चैनल्स जो ओपन थे मोटर न्यूरॉन के टाइम पे, ये क्लोज कब होंगे, जैसे ही एसीएच ब्रेक डाउन करा, अगेन एसीएच बाइंड नहीं कर रहा, दैट मींस ये रिलीज क्लोज कर देंगे कैल्शियम रिलीजिंग चैनल्स. ठीक है. अब हम ये देखते हैं, दैट इज द डायग्राम गिवन इन योर एनसीईआरटी. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट ऑफ द थिन फिलामेंट एंड द रिलेटिव साइज आई बैंड एंड द एच बैंड. ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, वापस से दिखा रही हूँ. देखो, रिलैक्स स्टेट में, so this is your A band. याद आ रहा है, the entire myosin we call it as A band. Then where there is no overlapping we call it as H zone. When there is a overlapping we call it as O band, and then we call it as I band when there is no overlapping. Okay. This is hole is present and this is Z line, and in between you have the M line, and one Z line to another Z line we call it as sarcomere. ठीक है. So ये आपने एक देख लिया. अब इसको देखो, let me just erase this. When the contraction happen, see this is in the relaxed state. Then the second diagram is the contraction stage पे है. ठीक है. जब contraction हुआ, just check it out. पहले तुम्हारा head zone कितना था, अब तुम्हारा head zone कितना है. So head zone got decreased. ठीक है. पहले तुम्हारा overlapping कितना था, अब तुम्हारा overlapping कितना है, that means it got increased. पहले तुम्हारा I zone कितना था, अब तुम्हारा I zone कितना है, that means it got decreased. What about the A band? A band will show no change. Very, very, very important. What about the Z line distance? Obviously, it is going to decrease. That means sarcomere decreases. Sarcomere decreases. ठीक है. Maximum contraction में क्या हो जाएगा? Can you see the actin filament will slide over each other? That means it will overlap. यहाँ की actin will overlap with the यहाँ की actin. So you won't be able to see M line at all. M line at all. So this was whole about the contraction of the muscle. I hope you understood this. If I want to give you the gist of it, let me just make you understand what did I explain. So basically contraction and relaxation की बात करूं, so तुम्हारा contraction, just I'm writing in a short form जल्दी जल्दी में, ठीक है ना. मोटर न्यूरॉन ने सिग्नल भेजा तो अंदर कैसा हो गया तुम्हारा, पॉजिटिव हो गया, आउटर कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया. ठीक है. ड्यू टू विच व्हाट विल हैपन, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल विल गेट ओपन. जैसे ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हुए, कैल्शियम इनफ्लक्स होने लग गया. कैल्शियम विल बाइंड विद द synaptic vesicles. ठीक है. Now this synaptic vesicle will fuse with the presynaptic membrane. ठीक है. Which releases what? It releases the neurotransmitter ACH. This ACH binds to the receptor. Now this ACH binding to the receptor causes sodium influx, which makes the membrane depolarization. This depolarization travel through the whole T tubules. ठीक है. जैसे ही T tubules पे travel करती हैं, what will happen? Calcium releasing channel will get open. कहाँ पे थे ये, sarcoplasmic reticulum में. जिससे क्या होता है, calcium will enter into the sarcoplasm में. So that means calcium will increase in the sarcoplasm. This calcium will then bind to
this calcium will then bind to TPC. Calcium will bind to the TPC. This causes the unmasking of the active site of the actin. Unmasking the active site of the actin. ठीक है ना? Then this causes what? Now your actin is ready for binding with the myosin. अब क्या होगा? Myosin ऐसे ही bind कर जाएगा? No. First we have to energize the myosin head. That means ATP hydrolysis in the myosin head. Then जैसे ही ATP hydrolysis हुआ, energy मिल गई, energy मिलते ही what it will form? It will form a cross bridge. That means the head of myosin bind with the active site of the actin. जैसे ही हुआ, there is the rotation or the sliding of the cross bridge. ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ? Your and ADP and PI will be released out. ठीक है ना? अभी भी तुम्हारा myosin head is attached to the active site of actin. Then what will happen? Breaking of active site है, breaking होगा, breaking of cross bridge. कैसे होगा? Very 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 important, only and only in the presence of ATP. जैसे ही न्यू ATP आएगा, अगेन सेम साइकिल, ATP हाइड्रोलाइज होगी और ये सेम साइकिल होगा. ठीक है, दिस इज फॉर द कॉन्ट्रैक्शन. रिलैक्सेशन के लिए हमने सीधा उल्टा पढ़ लिया. व्हाट विल हैपन? नो मोटर न्यूरॉन्स, इनसाइड इट विल बी नेगेटिव, आउटसाइड इट विल बी पॉजिटिव. ठीक है, देन में वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज हो जाएंगे, कैल्शियम इनफ्लक्स नहीं होगा, देन कैल्शियम विल नॉट बाइंड टू द साइनेप्टिक वेसिकल, फ्यूज नहीं होगा, रिलीज ऑफ ACH नहीं होगा, ACH रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा, ACH है ही नहीं तो बाइंड कैसे करेगा, सोडियम इनफ्लक्स नहीं होगा, डीपोलराइजेशन नहीं होगी, T ट्यूब्यूल से ट्रैवल नहीं करेगा, कैल्शियम रिलीजिंग चैनल क्लोज हो जाएंगे जो हमने एक्स्ट्रा ACH को ब्रेक करा था. ठीक है, अब जैसे ये रिलीज नहीं हुआ, यहाँ पे क्या होगा? जो एक्स्ट्रा कैल्शियम थे, the extra calciums which were present, these extra calcium should enter into the sarcoplasmic reticulum through the pump, calcium pump. That means TPC से calcium bind नहीं करेगा, otherwise masking हो गई तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? Myosin head will not bind with the actin. ठीक है, this is the whole process we have understood in the mechanism of contraction. Next, we will study in the another class. Thank you, everyone.